Hello everyone and welcome to all in Chemical Bonding and Molecular Structure class 11th lecture 3. So today we are going to discuss about the limitations of octet rule. As you know well, in case of octet rule, each atom should have the 8 electrons in their valence shell after transferring of electron or after mutual sharing of electrons. So now here the some limitations of octet rules are there, in which we will see the atoms which don't have the 8 electrons in their outermost shell, yet they are stabilized one. So first of all we will discuss about कि whenever the atom has less than 8 electrons in their valence shell and yet they are stable, they comes in the category of incomplete octet. So now see, for example, the BH3, BeF2, AlCl3 means the compound of the 13 group element, 12 group element and the 12 group element and 13 group element, which will explain about the incomplete octet rule. So first of all, you will see the example of BH3 molecule. In BH3 molecule, you can easily understand the boron belongs to the 13 group element and it has the 3 valence electrons. Hydrogen has the 1 valence electron and they combine together, and you will see that the boron has the 6 electrons after the combination. It is less than 8 electrons. It violates the octet rule, but still it is stable one. So now the another example you will see, if suppose you are having BeF2 molecule. Now draw the structure of Lewis symbol for the BeF2. So beryllium belongs to the 12 group element, the second group element. So here we will see the second group element, not the 12 group element. So BeF2 molecule. In BeF2 molecule, we will have this kind of the Lewis symbol. Now you will see the central atom. In case of this, central atom will have the 4 electrons in their valence shell after the combination. Again, it violates the octet rule, but still it is stable one. So similarly, you can draw the structure for the AlCl3. So you will find that all of them will violate the octet rule and they are having the incomplete octet. Now the second limitation is the expanded octet. In expanded octet, the atoms have more than 8 electrons in their valence shell after combination and still they are stabilized one. So here you can take the example of 15 group element, 16 group element compounds in which they are having more than 8 electrons in their valence shell. So here you can easily see regarding the PCl5 molecule or PF5 molecule means the compounds of phosphorus. Now here the phosphorus has the 5 valence electrons before combination like this, and the F molecule, fluorine molecule, 5 fluorine molecule will surround it. So the 5 phosphorus के अपने electrons हो गए और 5 fluorine से अगर इसको मिल गए तो phosphorus has the 10 valence electrons and which is greater than 8 electrons, and it comes under the category of the expanded octet. Now again you will see the example of the SF6 molecule. In SF6 molecule, you will draw the structure of Lewis symbol of SF6. Sulfur has the 6 valence electrons in their valence shell because it belongs to the 16 group element. And you can draw the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p4. So 6 valence electrons are present. So the 6 fluorine atoms surround it like this. And each fluorine atom will share the 1 electron to its, and each fluorine atom has the 3 non-bonding electrons. ये सबके होंगे आपके. अब अगर आप सल्फर में काउंट करेंगे तो you will get the 12 electrons, which is again greater than 8 electrons and comes under the category of expanded octet. Similarly, you can form for the IF7, and if you will draw for the Lewis symbol for IF7, you will find that iodine will have the 14 electrons in their valence shell. So all of them will violate the octet rule. Another limitation of the octet rule is odd electron molecule. See, in odd electron molecule, in which one atom contains the unpaired electron after the combination. These are the very special case of the octet rule, or
the structures Lewis symbol for these molecules. Suppose you are having the NO molecule. In NO molecule, the nitrogen has the 5 valence electrons. So हमने 5 valence electrons बनाए, and oxygen has the 6 valence electrons. हमने 6 valence electrons बनाए. Oxygen needs the 2 electron to complete the octet. तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके आ जाएंगे, so यहाँ पर it will make the double covalent bond. यहाँ से ये ऑक्सीजन का आपका बना लेगा डबल कोवलेंट बॉन्ड. सो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड बन गया. नाउ यू कैन इजीली सी कि द नाइट्रोजन हैज द 3 इलेक्ट्रॉन्स, मींस द 1 unpaired electron is there and these 2 electrons are paired one, and this is the symbol for the Lewis symbol for the NO molecule. Similarly, you can see for the NO2 molecule. In NO2 molecule, you can easily understand there is one coordinate covalent bond will found. See how does it form? Now, you are having NO2 molecule. So, first of all, we have to draw the skeleton of it. Nitrogen is the central atom and 2 oxygen atoms surrounds the nitrogen in this manner. अब हम बनाते हैं इनका Lewis symbol. अलग अलग सबका हम सेपरेट बनाएंगे पहले Lewis symbol. तो ये Lewis symbol बन गया आपका नाइट्रोजन एटम के लिए. 5 valence electrons and the oxygen will contain the 6 valence electrons. Now, this oxygen atom needs its 6 electrons, 5 electrons and 6 electrons. This oxygen needs the double 2 electrons to complete the octet. So, it will forms the double covalent bond with the nitrogen atom. यहाँ से इसने इसको double covalent bond बना लिया. Now, this electron, now the nitrogen will have the 5 plus 2. दो इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले, तो it will has the 7 valence electrons now. यहाँ से इसके 7 valence electrons हो गए. अब इसको चाहिए 2 electrons to complete the octet. But the nitrogen अगर 2 electron double covalent bond बनाएगा, so it will be highly. Nitrogen is very small in size, तो bond length इतनी कम हो जाएगी कि stabilize नहीं हो पाएगा. So it will forms the coordinate covalent bond with these lone pair of electrons. ये इनके साथ में ऑक्सीजन के साथ में ये इसके साथ coordinate covalent bond बनाएगा. So you can see we will get this kind of the structure of NO2 molecule, which is very important because these structures we will discuss in the resonance also. So you should be aware about the Lewis symbol before resonance. So now you can easily understand that this unpaired electron will be present in NO2 molecule. And we will discuss about this property of the NO2 molecule which arises because of the presence of this unpaired electron, that is NO2 is brown color gas. ये brown gas होती है because of the presence of unpaired electron and there is an excitation of electron takes place. We will see in the salt analysis also that brown gas is evolved when the nitrate salt will be heated with sulfuric acid. And because of this unpaired electron, the NO2 will easily dimerize. Dimerize हो जाएगा and it will forms N2O4. That we will discuss in the 12th standard also. So NO2 molecule का जो structure आपने लिया है, it will contain the one unpaired electron. Because of this one unpaired electron, it is brown colored gas and it can be easily dimerize. Dimerize का मतलब है it will आपका doubling हो जाएगा और N2O4 में ये stabilized हो जाएगा, NO2 में ये stabilized नहीं है. So here we have discussed about the expanded octet, incomplete octet and odd electron molecule. The another limitation of the octet rule is it does not explain the noble gas complexes. As all of us know that noble gases are having the complete octet, but the xenon can form the complexes because among the noble gases, ये question आपका MCQ में भी आ सकता है कि which noble gas can form the complexes, that is the xenon. It is because of the reason that xenon has the large size among the noble gases and it has the low ionization energy. Because of that reason, it can form the complexes with fluorine and oxygen because fluorine and oxygen are electronegative in nature. These two questions can be asked in the examination. So it does not explain. Octet rule does not explain कि if the xenon has the complete octet, then how can we form the complexes of the xenon? These complexes we will discuss in the 11th standard in the shape of the molecule and in the 12th standard in P block element. It does not explain the shape of the molecule. As you know well, whenever we are drawing the Lewis symbol,
द शेप इज डजंट मैटर, शेप आपका कोई भी होगा। जैसे अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, अगर ये मॉलिक्यूल हमने लिया तो ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है। जैसे O3 का अगर हम मॉलिक्यूल लेते हैं तो जनरली हमने O3 का ये मॉलिक्यूल बनाया था, बट इट हैज द बेंट स्ट्रक्चर, बेंट शेप होती है क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन आता है इलेक्ट्रॉन्स का, बट इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द नोबल गैसेस। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ H2O मॉलिक्यूल आल्सो। जब हम H2O मॉलिक्यूल का अगर ल्यूइस सिंबल बनाते हैं, सो ल्यूइस सिंबल हम ऐसे बना देते हैं विच शोज द लीनियर स्ट्रक्चर, बट वाटर डज नॉट हैज द लीनियर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर गलत है। तो इट हैज द बेंट स्ट्रक्चर, वी शेप स्ट्रक्चर, and the two lone pair of electrons are present on it, and it has the bond angle 104.5 degree. ये इसका bond angle होता है. So V shape molecule will be there. So it does not explain the shape of the molecule, which is based on the repulsion of the valence electrons, that is a lone pair and bone pair of electrons. It does not relate the stability of the molecule with energy. It only explains कि if the valence shell will contain the 8 electrons except helium and hydrogen, which are having the diplet, that is 1s2, and it also has the 1s2. So only the molecule will be stabilized if they are having the complete octet after combination. But it does not relate the molecule with the energy. If the atoms will combine together, they will loses their energy and stabilize the molecule. Now, after that, we will discuss about the bond parameters. In bond parameters, जैसे कभी भी अगर आप कोई बॉन्ड बनाते हैं, सपोज ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड बना है, बॉन्ड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हम बॉन्ड को जजमेंट करते हैं, तो दैट इज नोन एज द बॉन्ड पैरामीटर्स. Suppose the first bond parameter is the lattice enthalpy. Enthalpy is denoted by H, so delta H lattice we will write in this manner. So delta H lattice में you can see this equation, that is delta H lattice is the amount of heat released when 1 mole of the ionic compound in its solid state is formed from its constituent gases ions. Means you can say कि whenever the molecules, suppose you are having the Na positive, Na and Cl molecule is there, NaCl molecule ये बन जाएगा. NaCl में in solid state it will formed. Na positive will be present in gaseous form. Cl negative will present in gaseous form, and that will result in the formation of NaCl solid. This is the equation. But in nature, you don't have the Na positive ion, you don't have the Cl minus ion. इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे अभी बॉर्न हैबर साइकिल में, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे. वैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सोडियम इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन द नेचर. फर्स्ट ऑफ ऑल, the sodium will be converted into sodium gas with the, this is called sublimation. Solid is directly converted into gas. So heat change during this reaction is known as delta H sublimation. Okay. Now Na gas, अब हमारे पास आ गया sodium gas. This sodium gas will be converted into Na positive gas, and there is a release of 1 electron. All of you know very well that this equation is the ionization. So this is known as ionization enthalpy, delta Hi, ionization enthalpy. After that, we will get this Na positive gas. So we are taking this Na positive gas and Cl minus gas, you know well, कि Cl2 is present. So first of all, the Cl2 will be dissociate to give Cl2 gas. This is called delta H dissociation. पहले जो Cl2 है वो एक एटम में कन्वर्ट होगा. अब क्या होगा कि जो Cl आपके पास आ गया, this Cl in one gas molecule atom will convert it into Cl negative gas. ये इसमें convert हो जाएगा. And what is that called? This is called delta H gain. This is called electron gain enthalpy. Now you are getting Cl minus. So before reacting, before formation of NaCl solid, we need the Na positive gas, which includes these two equations, and we need Cl negative gas, which includes these two equations. And after that, we are getting a new energy change. This is called delta S lattice. Hope now it is clear to you कि how will you get the Na positive gas from the atmosphere and Cl negative gas from the atmosphere. And after the combination of these two, you will get NaCl solid, and this is ionic solid, 1 mole of the substance. The heat released, because the stability of the molecule is depending upon the heat released or heat absorbed.
जब हीट रिलीज होगी तभी आयनिक सब्सटेंसेस आपका स्टेबलाइज्ड होगा. So I think now the lattice enthalpy is clear to all of you. That is, the stability of the molecule is directly proportional to lattice enthalpy. जितनी हीट रिलीज होगी उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. So delta H lattice is exothermic in nature. एक्सोथर्मिक इन नेचर. अगर ये फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये डिसोसिएशन हो रहा है, तो डेल्टा एच आपका एंडोथर्मिक इन नेचर हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी. सो फर्स्ट वन वाज द लैटिस एंथैल्पी and that will also decide the stability of the molecule. Now the second bond parameter is the bond angle. All of you know well कि when the electrons will combine together, these electrons are present in the orbitals. Orbitals के अंदर present होते हैं and these orbitals will combine together and they will contain the bond pairs around the central atom. जैसे अगर हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है वाटर का, जो हमने ल्यूइस सिंबल वाटर का बनाया था, वाटर में 2 lone pair of electrons are there and these 2 are the bond pairs. Okay, so they are having the bend structure and they are having the bend structure with the bond angle 104 degree or 104.5 degree. So this is because of the repulsion between the lone pair and bond pair of electrons that we will discuss later on. In case of ammonia, always remember कि जो भी आप bond angle लेंगे that will between the orbitals of bond pair, not the lone pair. वो decide नहीं करता, हमेशा bond pair decide करता है कि उनके बीच के जो एंगल होगा उसको हम bond pair कहते हैं, उसको हम bond angle कहते हैं. तो यहाँ पर जो आपका अमोनिया का है वो ये वाला बॉन्ड एंगल हो चाहे ये वाला, क्योंकि इट हैज द पिरामिडल शेप. जब हम शेप देखेंगे तो ये पिरामिडल शेप है और हर एक NH 3 ये आपके बॉन्ड है जिनके अंदर बॉन्ड एंगल सबका 107 डिग्री रहेगा. ये अमोनिया है. तो लोन पेयर डिसाइड नहीं करेगा, ये बॉन्ड एंगल बॉन्ड पेयर के बीच में जो ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच के एंगल को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर और बॉन्ड एंगल. Now the another characteristic or the parameter of the bond is bond length. All of you know well bond length means the distance between the, जब हम bond बनाते हैं तो उसकी जो length को हम बोलेंगे bond length बोलेंगे. So it is the equilibrium distance between the nuclei of the covalently bonded atoms in a molecule. Means दो atoms हमने लिए, ये उनका न्यूक्लियस है जिसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं. ठीक है, ये हमने लिया, एक हमने ये एटम लिया, इन दोनों को हमने कंबाइन किया और इसे हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. दो ऑर्बिटल्स ने आपस में ऐसे करके ओवरलैप किया, तो इनके बीच के न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस है इट इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द कोवलेंटली बॉन्डेड एटम. इसको हम बोलते हैं रेडियस. ये जो आपका बीच का है इसको हम बोलते हैं रेडियस. ओके, इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि चाहे एटम ए से बी की तरफ नापिए चाहे बी से ए की तरफ नापिए, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. इस टोटल बॉन्ड लेंथ को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं. एंड it is very obvious कि if the bond length is longer, that means the atoms are present far apart from each other and the stability will be decreases. So the stability and the bond lengths are inversely proportional to each other. Another one is the bond order. It is the number of bonds between the two atoms in a molecule. Isoelectronic species have the same bond order. जो भी अगर आप bond order लेते हैं, जैसे अगर आपने हाइड्रोजन एटम लिया, जब आपने ल्यूइस सिंबल बनाया था तो हाइड्रोजन एटम के बीच में जो आपका एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना था तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया. अगर आप N2 लेते हैं, N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया. ऐसे ही अगर आप लेते हैं O2 तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया. दो एटम्स के बीच में जितना बॉन्ड बनता है, लोन पेयर नहीं बॉन्ड बनता है, बॉन्ड पेयर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर. अब अगर आपने लेना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मींस जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है. कैसे? जैसे N2 अगर आप लेते हैं, N2 के अंदर हुआ 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन. Cn- अगर हम लेते हैं साइनाइड, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन, तो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन. सो टोटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 14 इलेक्ट्रॉन. सो इफ द N2 14 इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो साइनाइड आल्सो हैज द सेम बॉन्ड ऑर्डर. सिमिलरली यू कैन सी फॉर द F2 मॉलिक्यूल. अगर आप F2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो F2 मॉलिक्यूल में द सिंगल बॉन्ड विल बी प्रेजेंट, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1. F2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 9 + 9 दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. नाउ सपोज वी आर टेकिंग O2 2-. O2 2- इज पेरोक्साइड. मींस जैसे अगर आप लें इसके अंदर तो 8 + 8 + 2, तो ये आपका क्या बन गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट मीन्स द बॉन्ड ऑर्डर इज 1. और अगर आप O2 2- में अगर आप देखें
तो इट इज ए काइंड ऑफ परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है जिसके अंदर वन सिंगल ऑक्सीजन बॉन्डेड टू सिंगल ऑक्सीजन और ये नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज दूसरा नेगेटिव चार्ज ऐसे अपीयर हो जाता है। अगर आपको नेगेटिव चार्ज हटाना है तो आप इसके साथ हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तरह से आपको शो होगा, दैट इज ए परऑक्साइड लिंकेज, जो हम आगे थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। सो कोई भी मॉलिक्यूल अगर होंगे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। Another one is the bond dissociation energy. It is the energy which is required to break a particular bond between the two atoms in a molecule. Like HBr है, HCl है, तो इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए ब्रेक करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच बॉन्ड। कि कितनी एनर्जी, अब इट इज वेरी ऑब्वियस, इफ द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग तो डेल्टा एच बॉन्ड इज वेरी हाई, और अगर आपका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी भी मॉलिक्यूल की कम हो जाएगी। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड द स्टेबिलिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अनदर इज द बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी इज द एवरेज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे अगर आप लेते हैं CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल में 4 CH bonds are present. Like suppose you are having CH, CH, so 4 CH bonds are there. If you want to be calculate the bond energy of the polyatomic molecule, तो ये हो गया 1 CH, second CH, third CH and fourth CH. तो इन चारों को हम ऐड कर देंगे and divided by 4, तो we will get the delta H bond. Means you can say the bond enthalpy is the average of bond dissociation enthalpy. Similarly, if you are having like CH2 Cl2 molecule, तो इसमें हो जाएगा CH 1CH plus 2CH plus 1 CCl bond plus 2 CCl bond, इसका हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इसका भी हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आपका निकलेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर दिस। ये मॉलिक्यूल का आपका निकल जाएगा कि बॉन्ड एंथैल्पी में हम निकालते हैं एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट the limitations of octet rule and the bond parameters. So you have to do it in your copies, and whenever you are having the problem, we will discuss in the next lecture.